So I think it's visible. You're like, great. So welcome all of you guys and in this session of the Menti Quiz. So welcome all of you. सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल. My name is Aditya Arya, master teacher of Vedantu and taking care of mathematics and statistics portion. So today we are going to do 10 must-do questions from the statistics. Now to join this quiz, what you should do, you should go. You should read this code. It's 961353. So go to menti.com, use this code and enter into the quiz. This is how you will be able to join the quiz. This is how you will be able to answer. Okay, so you do not have to answer in the chat box. You have to answer through the menti.com. Clear? So let me know if you have joined already. Write down hi Monica, welcome. So all of you will join this quiz. We will do matrix 10 questions that you have to do, which will definitely clear your doubts, which will definitely clear your basic concepts. Shagun, welcome. So how you guys will join this? Menti.com and you will use the code 961353. I'm writing down in the chat box so that you can use it. It's 961353. Clear? It's 961353. Go to menti.com and we will start now. So welcome again. फिर से कौन कौन आ गया है? शगुन, मोनिका. Okay, दो लोग हैं अभी. So guys, we will do 10 questions on the matrix today. ठीक है? I hope you have already joined now. And let's start with the question number 1. And we will try to cover each and every concept over here. So you have to go. We are waiting for the players. देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, and then we will start this particular quiz. ठीक है? तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, write down hi in the chat box and we will see. Okay, how you will join? Okay, one person have joined. You will go to www.menti.com. It's written in the chat section. Okay, and then you will use the code 961353. So now we are starting it right now. Let's see. So the question number 1 is on your screen. No results yet. Just a minute. Okay, so we will have question number 1. So question number 1 will be visible on a screen now. So it's matrix 2x plus y, 4x, 5x minus 7, 4x is equal to the second matrix. Then you have to tell what is x and y. You are having exactly 1 minute. Okay. So basically in this question we have covered equality of the matrix concept. So you are having 30 more seconds. 30 more seconds guys, quickly answer. So you are having 4 elements of the matrix. You have to select one through which you will have your values of x and y quickly. देखिए कौन सा वैल्यू है इसके अंदर. Last 15, 14, 13, 12. Those who are joining just right now, go to menti.com and use code 961353. This is how you will join. Great. So we are having 3 responses. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. So question is, okay, so we are having 3 answers. Answer number B is correct. ठीक है? अच्छा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं. Okay, so who have answered? Revit. Who is Revit? Let me know. Namaste Bhavesh. Who is this Revit? Okay, fastest and vote got and Kashish. Okay, great. Now we will see how to answer this particular question. Okay, before we do question number 2, let's solve this particular question. ठीक है? अच्छा, over here there was 4x. Over here there was 4x. Over here it was 5x minus 7. And I can remember this particular thing over here is x plus 6.
So whenever you come across, and definitely if you are having a question from the matrix, you are either going to have the question of the equality of matrix or multiplication of matrix or transpose. These three concepts are super duper important. So what does equality of the concept says? That if A11, this is matrix A, this is matrix B, then element of the first matrix, first column first row matrix element will be equals to first row first column element of the second matrix. Similarly, first row second column element of the first matrix will be equal to, ये आपका क्या है, B first row second element matrix. This is B21 and this is B22. For me, equating A22 is equal to B22 is very easy, because A22 involves just 4x and B22 involves just x plus 6. From here 4x and x, it will be equal to 3x equal to 6. From here you can have the answer x equals to 2. आई बात समझ में? अच्छा, अब x इक्वल टू 2 आ गया बेटा. अब यहां पर क्या होगा, वी विल चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y. ठीक है, y का वैल्यू चेक करना. आप कैसे चेक करेंगे? यहां पर आपको दिया हुआ था दिस वॉज 7y minus 13. So you can equate any of the element, doesn't matter, but as of now I can recall the question that these two 4 into 2 is 8. Okay, 7y minus 13, when you will transfer minus 13 over here, it will become 21 equals to 7y, and y is equals to 3. I hope it is clear that x is equal to 2 and y equal to 3. सभी को क्लियर है तो फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो in the chat section, and then we will proceed for the next question. So in the next 8, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, your question will be on your screen. And those who just joined us, go to menti.com and use the code 961353. Great. Good morning, Baljeet. So question is in front of your screen. It's matrix A is equals to Aij, and the order of the matrix given 2 into 2, where the definition of every element is given, that if I is equal to j, it is equal to 0. Okay, element will be equal to 0 if I equal to j, and if I not equal to j, element will be equals to 1. So you will check in a 2 into 2 order matrix, you will be having A11, A12, A21, A22. So you are having 20 more seconds. I have got 7 responses. Next, 5, 15, 14, 13. Last 10 seconds, and we are waiting for a few more answers. We have to calculate A square. Now we will see how to multiply matrix. 2, 1, time is up. I have got 8 responses. So let's see who have given the right answer. So 4 people have given the right answer. Answer is option number A. And let's see what does leaderboard says. That, okay, just a moment. Okay. So leaderboard topped by मोनिका. और ये कौन है? मैथ्स नहीं आती. अरे बेटा बहुत बढ़िया, लेकिन टॉप कर रहे हो आप. यू आर ऑन द सेकेंड पोजिशन. भावेश पारिक क्लास 11 से है एंड ही इज अटेंडिंग फॉर द 12th. वेरी गुड बेटा. प्रो, क्रिश, कशिश, अलमास, मोनिका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वी विल मेक श्योर कि हम लोग, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले इस क्वेश्चन को करना सीख लेते हैं. इट वॉज गिवन द मैट्रिक्स A is A011. It was given Aij basically. It was given Aij. I'm sorry. It's Aij 2 into 2 order matrix, which means A is equals to A11, A12, A22, A21, A22. Now it is given if Aij will be equals to 1 if I not equal to j. Okay, I think it's A equal to j, I equal to j, and if I not equal to j, it is equals to 0. यही है, यही क्वेश्चन था. तो अभी यहां पर क्या हो जाएगा? A is equals to A11, I is equal to j means this is 1,
दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1. ठीक है. अब आपको a स्क्वायर निकालना. दिस इज व्हाट I. So a square will be equals to I. I hope you have got the answer now. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं ऑन योर स्क्रीन. आई होप समझ में आया होगा. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अगले क्वेश्चन में सीखेंगे हम लोग. ठीक है. ओके. क्वेश्चन इज 1 to 1, 1 to 0, 201, 102. वेरी गुड. ओके. उस क्वेश्चन को हम फिर से लगाएंगे बिकॉज क्वेश्चन वॉज डिफरेंट. एनीवेज last 90 seconds. Now we will check how to do multiplication. We will do this particular question and we will also do the last question because we have read it wrong. So 9 responses till now, and those who are joining, you know how to join our Menti Quiz. If you do not know, let me know. Time is up and I wish that, oh great, none of you are right for this particular question. So we definitely have to learn how exactly we have to multiply. अभी हम सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है. तो किसी को पॉइंट नहीं मिले, पोजीशन विल रिमेन एग्जैक्टली सेम एज इट इज. नाउ बिफोर वी गो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर वन. तो पहले हम पिछला वाला क्वेश्चन लगाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन क्या था आपका पिछला वाला, फिर से देखते हैं. It was given that A is equals to Aij. So this is the way of representing any matrix where I represents row number. If you do not know, you can write down this particular theory. J is column number. It's column number, okay? I is the row number, J is the column number. So if it is a 2 into 2 order matrix, see this is row number 1. This is row number 2. So every element will have the first letter as 1 over here and every element will have the first prefix as 2 over here. Now this is column number 1. This is column number 2. So this is column number 1. So second prefix will be same over in this column. It's 1. It's 1. It's column 2. So 2 and 2. Now it is given that Aij will be equals to 1 or 0. Now it will be equals to 1 when I is not equal to j. When I is not equal to j, here I is equals to j. So if I is equal to j, element will be 0. So element matrix A, I equal to j means this element will be 0. I not equal to j means it's 1. I not equal to j, it's 1. And this is I equal to j equals to 0. अब आपसे पूछा क्या था बेटा, अब आपसे पूछा गया था if we have calculated that a is equal to 0 1 1 0. Now we have been asked what is a square. ठीक है. अब आप मुझे बताओ when you will multiply two matrix, always remember this particular thing. If you do not know that when we multiply two matrix, always check their orders for sure. The order of this matrix, what is the order? Number of rows and number of columns. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, number of rows and number of columns. Now if matrix B is multiplicative with matrix A, then you will say that number of row over here, let's call it small r and let's call it small c. Then if two matrices are multiplicative, then number of column in the first matrix should be equals to number of rows in the second matrix for sure. And after multiplication, you will have a new matrix. Let's call it matrix D. And this matrix D will have the order, they have to be equal. If they have to be equal, let's remove it. And ultimately, you will have a matrix where you will have number of rows as equals to in the first matrix and number of columns as in the second matrix. बात समझ में आई?
अब यही चीज आपको यहां पर करनी है. Now, when you will multiply this 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, those who do not know. Now, see, every element is defined by row number and column number. So, first is row, second is column. So, always remember that first we will multiply row and second you will have in the multiplication is the column. And this is how you will write down the answer. 0 into 0. 0 into 0 plus 1 into 1. Okay, corresponding elements. Now similarly, I want A12. Now this is, let's suppose this is A12. A12 will be equal to first row and second column of this one. So 0 into 1, 0. 1 into 0 is 0. Total you will have it is 0. This is A21. A21 का मतलब क्या बेटा? Second row and first column. These two will get multiplied. 1 into 0 is 0 plus 0 into 1 is 0. It will be 0. ठीक है? And this is A22 means second row with second column. 1 into 1 is 1 plus 0 into 0 is 0. So 1 plus 0 is 1. And ultimately what is this? 1, 0, 0, 1. This is equals to I. I hope this point is clear. Now let's apply the concept in the second question. ठीक है? Clear हुआ सबको बेटा? Whatever we have discussed, I hope it's perfectly clear to all of you. Clear? चलिए सर, लॉन्ग क्वेश्चन था क्विज का. यस, 1 मिनट का सवाल था, लेकिन बेटा अगर आपको आता होगा ना हाउ टू मल्टीप्लाई, यू विल नॉट टेक एनी टाइम. 1 मिनट इज मोर देन सफिशियंट. करके देखते हैं एक बार. ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा क्या था आपका? 1, 2, 1. ठीक है, अब ये क्या है? 1, 2, 0, 2, 0, 1 एंड 1, 0, 2. ये आपको क्या, और ये क्या है? 0, 2x. अब देखो करना क्या है. ये कौन सी मैट्रिक्स है? 1 रो 3 कॉलम. ये क्या है? 3 into 3. और ये क्या है? 3 रोज 1 कॉलम. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, देखो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा. फाइनली बेटा जो बनेगा दैट इज 1 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स. यू विल हैव इक्वल्स टू ओ. ओ का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स विल बी जीरो. सो लेट्स मल्टीप्लाई. नाउ व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू, यू विल हैव 1 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स. ठीक है, यानी कि 1. सी एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज aij, मींस रो and this is column. So you will multiply row with column number 1. Row with column number 1. 1 into 1 is 1 plus 2 into 2 is 4 plus 1 into 1 is 1. Okay. Now this is A11. Here you will have A12. First row, second column. A1 into 2, 2. 2 into 0, 0 and 1 into 0, 0. Now you will multiply this. 1 into 0, 0. 2 into 1 is 2 plus 1 into 2 is 2. आया आंसर? Now you will multiply this with 0, 2 and x. इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं. चलो फटाफट से. ठीक है, अभी ये कैसे होगा? सेम तरीका. ये क्या आपका 4, 5, 6. This has become 6. This has become 4. Now whenever you are going to have a matrix, first row, first column means you are going to have just one element. 6 into 0, 0, 2 into 2, 4 plus 4 into x is 4x. अब ये क्या है बेटा? This is equal to 0. ये कब होगा? When x will be equals to -1. आई बात समझ में सबको? क्या ये सबको क्लियर है बेटा? क्विकली रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. अभी ये सबको क्लियर हुआ कैसे मल्टीप्लाई करना था? अगर अभी भी आप लोगों को दिक्कत है, यू कैन क्विकली वॉच द रिकैप आफ्टर द सेशन. 1 घंटे में हमने आई थिंक वी हैव टेकन 2 सेशंस ऑफ द मैट्रिक्स एंड यू कैन गो ओवर देयर एंड वॉच ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द डिटेल. यस, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Those who are new and have just joined us, you know how to join the Menti Quiz. Go to menti.com and use the code 961353. बार बोल रहा हूं ताकि नए लोग ज्वाइन कर पाओ बेटा. 1 मिनट है, सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब पता होगा तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो.
A and B both are symmetric matrix. What is the property of the symmetric matrix? Final property that you have to recall. So last 30 seconds are remaining, and literally this question, if you have clicked, okay, 6 people have clicked the answer. Last 20 seconds, 15 seconds. Let's see. And I will tell you what is the basic concepts of the symmetric and skew symmetric. Basically, it is related to the 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. So 6 people have responded for this quiz. And 4 people are exactly right. चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को बेटा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो क्या दिया हुआ है आपको. आप लोगों को दिया हुआ है A is a symmetric. Always remember, if A is a symmetric, then A equal to A transpose, or you can write down transpose as A dash. If B is a symmetric matrix, then B equals to B transpose. और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, that AB transpose of AB. This is the condition when A and B are symmetric matrix. ठीक है, जब ये सिमेट्रिक होता है तब. एंड दिस इज ऑलवेज, ये जब होता है, ये कब होता है, ऑलवेज, दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज. अब इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग. और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी, अच्छा यहां पर एक और बात लिख दूंगा ताकि आपको और समझ में आ जाए कि ए प्लस माइनस बी transpose is equals to A transpose plus minus B transpose. So addition, when you will addition or do subtraction, transpose will behave exactly, but it is commutative, okay? But over here it's not commutative. You have to reverse the order. So it is given that A B transpose minus B A transpose. Now if you want to check whether it's a symmetric or not symmetric, you have to take transpose. Write down this point. Whenever you want to check whether something is symmetric or not symmetric, take transpose of it. Let's call this whole thing as P, okay? And now we are calculating P transpose. So P transpose will be equals to, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या निकलेगा, A B transpose minus B A transpose, and now this will be equals to B transpose of transpose and A transpose minus A transpose of transpose and B transpose. अब बेटा ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना. यहां पर एक और बात लिख देना, if we are taking double times transpose, it will be back again. So B transpose of transpose is B. This is the value of P dash. This is A dash, okay? अच्छा अब ये क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ए एंड दिस इज बी ट्रांसपोज. और ये क्या है बेटा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ पी, है या नहीं. ये पी है आपका और इस पी का माइनस टाइम्स है. देख लो, माइनस टाइम्स ऑफ दिस, माइनस टाइम्स ऑफ दिस. एंड whenever you are having p dash equals to minus p, you will say that it is a skew symmetric matrix, okay? And when p dash is equals to p, ये हम बोलेंगे सिमेट्रिक होगा, ठीक है. अच्छा इसके अलावा हमने क्या सीखा ट्रांसपोज से, द ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज will be equals to A. और हमने इसके अलावा क्या सीखा, मल्टीप्लीकेशन of two, transpose of multiplication of two matrix will reverse the order after taking the transpose. But in the addition subtraction it doesn't matter at all. Your brackets will be open, okay? It will be A transpose plus minus B transpose. ये सब हमने सीखा है. और अब फाइनली बात, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये ट्रांसपोज क्या होता है. ये ट्रांसपोज क्या होता है, रो विल बिकम कॉलम एंड कॉलम विल बिकम रो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, 2 1 3 5, ओके. अब ए ट्रांसपोज क्या होगा कि जो रो के अंदर है, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम, ये आपका होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, second row will become second column and third row will become third column। देखो इस मेंटी क्विज के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे और नए नए क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मस्त क्वेश्चन था। ओके चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो कौन टॉप कर रहा है, फिलहाल टॉप कर रहा है भावेश पारेख फ्रॉम क्लास 11। वेरी गुड बेटा। मोनिका सेकेंड, मैथ्स नहीं आती, वो थर्ड पर है और आएगी बेटा तो क्या होगा, फाड़कर निकल जाओगे इस पूरी शीट को, लीडर बोर्ड को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स, लिखा हुआ है नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन मैट्रिक्स। अभी यहां पर दोनों चीज हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। सो लास्ट 45 seconds, 2 people have already answered. Very good. सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये भी हम चेक करेंगे। तो हमने क्या क्या सीख लिया आज, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स सीख लिया, वी हैव आल्सो सीन ट्रांसपोज, वी हैव आल्सो सीन सम प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज, वी हैव आल्सो सीन इसकी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। ये सब आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है बेटा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स के अंदर। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। So last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. I have got 9 responses. 3, 2. Quickly, 1 time is up. So 9 people have answered, and only 3 people are right, and the remaining 6 people are wrong. Need not to worry बच्चा। अभी हम लोग लगाएंगे एक सिंपल सा क्वेश्चन वापस से इसी को, और आप लोग बोलोगे सर कितना इजी क्वेश्चन था, बस इधर उधर निकल जाता हूं कभी कभी तो आंसर नहीं आता है। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, नाउ व्हेनेवर इट इज गिवन x इज इक्वल्स टू 2x, इट इज 2, इट इज 3, इट इज x, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। दिस इज 8, दिस इज 5x, दिस इज 4, this is 4x, and this is equals to 2 times of x square plus 8, 24, this is 10, and this is 6x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट डज स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेज, व्हेन अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर और डिवाइड बाय अ नंबर, each and every element will get operated। हर एक एलिमेंट आपका ऑपरेट होगा। each and every element will get operated means if it is division you will have division, if it is multiplication that will be multiplication। so x into 2x 4x square, sorry 2x square, x into 2 2x, each and every element will get multiplied, x into 3 3x, x into x x square, plus 2 into 8 16, 2 into 4 8, 2 into 5x 10x, and 2 into 4x is 8x। this is equals to 2 into x square plus 8, 2x square plus 16, 2 into 24 is 48, 2 into 10 is 20, and 2 into 6x is 12x। अच्छा, अब एडिशन कैसे करते हैं। we have seen equality, exactly same, the corresponding elements will get added, और हम यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी करेंगे इस क्विज के बाद। now this will be get added to this one, so a11 will be added to b11, first row first element will be added to first row first element, so this will be 2x square plus 16, it's same over here, it's same over here। now this element will be added to this particular one, so 2x plus 10, 2x plus 10x is 12x, ये आपका कितना बना 12x।
Okay, now 3x, now this will be added to this one, 3x plus 8, and this will be added to this one, this will be x square plus 8x. अब ये किसके बराबर है बेटा? This will be equals to this one, means ये वाला एलिमेंट this will be equal to this one, equality of the matrix. अच्छा, अब ये जो 12x है ये बराबर होगा 48 के. अब बच्चा अगर 12x इज इक्वल्स टू 48 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा? 4 होगा. होगा नहीं होगा? अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो. 3x प्लस 8 इक्वल टू 20, 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 20, 3x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, और आप इसको इससे करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 12x. यहां से आपकी दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4. x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट x की नॉन जीरो वैल्यूज. Okay, so those who have answered option number B cannot be possible because x cannot be equal to 0. आई बात समझ में सबको? तो आई होप पोजीशन चेंज होगी अभी इसके अंदर, और पोजीशन चेंज होने के बाद भी भावेश एट द फर्स्ट एंड अलमास एट द सेकेंड, कशिश थर्ड, रिया मेंटी क्वीन. अरे बहुत बढ़िया बेटा, 1463. और मैथ्स नहीं आती बेटा नीचे मत आओ, ऊपर जाना है आपको. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड वी विल स्टार्ट नाउ. सो यू हैव टू फास्टली आंसर टू गेट द मोर पॉइंट्स. फटाफट से आंसर देना ताकि आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल पाए. So one person have already answered, 55 seconds, 50 seconds. So if you know the basic multiplication, you will answer it properly. Question को ध्यान से पढ़ोगे आंसर आ जाएगा. Options are very close, so take care of it. Yes. Last 20 seconds. You should know how to cross multiply, how to multiply two matrices, and this is how you will answer. Seven people have answered. Last 7 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. So 7 people have answered for this question, and 4 people are correct for this question. और क्वेश्चन क्या था देख लो. क्वेश्चन was that matrix A is a, क्या है ये बेटा? ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स. यहां पर लिखा हुआ है Aij of the order n, means A11, 0, 0, 0, 0 and so on. 0 A, ये क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम. 0, 0, 0, 0 डायगोनल मैट्रिक्स है. 0, 0, A33 and so on, so on, so on. एक काम करते हैं, to understand this question, let's take a 3 order matrix. Okay, that will be easier to depict what exactly question do wants to say. And B is a random matrix where we are having the element B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, 32, B33. Now we will multiply. Is it of the same order? Yes, it is given in the question that they are of the same order square matrix. Now A, B means that the row of this matrix will be multiplied to column of this matrix. Okay, so first row will be multiplied to first column. What do you will have? A11, B11, 0 into 0, 0 into B21, 0, 0 into B31, 0. Now, first row, second column, you will have A12, 11 and B12 and rest is 0. A11, B13, A11, B13, that's all. Now, similarly, second row, first column, 0 into B11, 0. A22, B1, B21, A22, B21 and so on, so on. तो यहां से एक बात क्या निकली कि हर एक एलिमेंट क्या है अपना AB का? AB is equals to Aij
एंड बी आई जे। आया बात समझ में? ए आई जे एंड बी आई जे, जो आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, is it clear? So normal property also says that if we are multiplying AB, it will be equals to aij and bij। ये आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टी थी। Is it clear? No, sorry, is this clear to all of you? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड की सिचुएशन क्या है? रिपीट अगेन। कार्तिकी, कौन सा क्वेश्चन आप बोलना चाह रहे हो बेटा? और हाय आयशा। सो लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं एक बार। लीडर बोर्ड की पोजीशन चेंज हुई है और अभी लेट्स सी व्हाट डज इट सेज, बट अब ज्यादा अंतर नहीं बचा है। भावेश स्टिल एट द टॉप एंड अलमास सेकेंड, कशिश थर्ड, रिया मेंटी क्वीन फोर्थ एंड बाकी के बच्चे बाद में। So this is your 7th question. Code is 961353. 961353 is the code. ठीक है, फटाफट से ज्वाइन करो। और अभी हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखो कार्तिक बेटा, आप थोड़ा लेट आए हो, क्वेश्चन के बीच में आए हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। डू नॉट वरी, if this question is not clear, we will take it again and you will write down in the chat box later. Now let's start. Enter. Answer fastest to have this, or this is a very good question, a simple question. बहुत बढ़िया। A and B दो मैट्रिक्स हैं of the order 3 into m and 3 into n, where m is equals to n. Then the order of 5a minus 2b. और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी फ्रॉम द इक्वालिटी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सारा अलजेब्रा पढ़ लेंगे अभी सब कुछ। Last 30 seconds, 5 people have answered, 4, 6 people have answered, 35. Yes, Aisha, we are having 3 more questions. We are having 3 more questions. और अब आपकी हर रोज मेंटी होगी, अब मान के चलिए ऑन एवरी अल्टरनेट डे वी आर गोइंग टू हैव द मेंटी क्विज। हम लोग मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, now 5 4 3 2 1 0, time is up and let's see what will be the answer. So correct answer is given by just one person. तो ये बेटा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपका, and Bhavesh is the only person who have answered it correctly. So Bhavesh is maintaining his position. He is the fastest overall and is the first right now. मैंने सही दिया था, हाँ बेटा बिल्कुल सही था आपका आंसर। अब सुनो यहां पर ध्यान से, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, इन तीनों के अंदर एक बात आपको ध्यान से समझनी है, दैट ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ऑल द मैट्रिक्स हैज टू बी सेम। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हैज टू बी सेम। आई बात समझ में? ये आपको चीज समझनी है। एंड दूसरा पॉइंट जो आपको यहां याद रखना है, corresponding elements will be operated. Corresponding elements will be operated. Means if it is equality, we will equal. For example, a11 with b11, a12 with b12, a13 with b13. Okay, and so on. We can say a21 and b21, a22 and b22. ठीक है बेटा, ये क्लास 12th के कॉन्सेप्ट हैं। आयशा, आप आए हो, अगर आप लर्न करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, देयर इज नो इशू। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये चीज पर हम लोग क्या सीखेंगे कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 3 into m। What is the order of the matrix B? 3 into n. What is the meaning of the order? What is the meaning of order? Order means it says number of rows and number of column.
ठीक है, इसको हम बेटर इस फॉर्म में लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम. Now there are 3 rows and m column and it is given that over here m is equals to n. Now 5a minus 2b. If we are subtracting two matrices, see, after scalar multiplication order does not change. Write down this point over here. After scalar multiplication and all of these and above all. सो आफ्टर इक्वालिटी एडिशन सब्सट्रैक्शन में यहां पर लिख देता हूं, ठीक है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में. दैट ऑर्डर डज नॉट चेंज आफ्टर इक्वालिटी एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. लिख लो कॉपी के अंदर कि इक्वालिटी एडिशन सब्सट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑर्डर चेंज नहीं होता है. इसका मतलब है कि 5a माइनस 2b, इसका ऑर्डर कितना था 3 इंटू m, इसका ऑर्डर कितना था, इसका भी ऑर्डर 3 इंटू m. दोनों का ऑर्डर सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3 इंटू m रहेगा और m इक्वल टू n है तो 3 इंटू n हो जाएगा. ओके, बात समझ में आई. तो आपका आंसर क्या होगा 3 इंटू n, ऑप्शन नंबर आई थिंक इट वॉज डी. ठीक है, क्लियर. यस आई गॉट अ पॉइंट आयशा, बट इट्स ओके, इट डजंट मैटर. मैं तो बोलता हूं कि जितने जल्दी कर लो अच्छी बात है बेटा. अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम तोड़ेंगे बेटा. अब इसके बाद 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा पॉइंट क्लियर होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब, और क्वेश्चन में जो दिया है एज इट इज. 1 person have replied, very good. Last 43 seconds, for 35 seconds. Ajay, those who do not know what is a minus b cube, it's a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. I repeat, a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. ठीक है, और a क्यूब प्लस b क्यूब में सब कुछ पॉजिटिव होगा, सेम टर्म्स. लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. time is up and let's see if we can correctly answered or not. Yes, 4 people have answered correctly out of 6 people. अब देखो बेटा क्या क्वेश्चन था. It was given that a minus I cube plus a plus I cube minus 5a, and it was given we have to calculate the value of this, and it was given a square equals to I. Yes, अच्छा आपने किया है बेटा, बहुत बढ़िया. अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके, माइनस 3a स्क्वायर बी. ठीक है, और क्या बन जाएगा, और बन जाएगा आपका ये प्लस 3a बी स्क्वायर. ये क्या बनेगा आपका प्लस a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a आई स्क्वायर, और ये क्या है माइनस 5a. अब यहां से कटने वाला है आई क्यूब माइनस आई क्यूब, 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और आपके पास फाइनली क्या बनेगा a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब. ठीक है, और यहां से क्या बनेगा आई स्क्वायर इज आई, और यू शुड नॉट राइट डाउन, दिस इज अल्टीमेटली 3a प्लस 3a, ये आपका बनेगा 6a माइनस 5a. फ्रॉम हियर now it is given a square equal to I, multiply a both the sides, you will have a cube is equals to a. If a square equal to y, then a cube equal to a. तो यहां पर ही हम क्या लिख देंगे 2a plus 6a minus 5a is 8a minus 5a is 3a. Option number D will be your answer. Okay, that's great that you are having this chapter in the 9th standard. So Aisha,
you will take part and you will show that 9th standard वाले भी 11th 12th वालों से बिल्कुल कम नहीं है. चलिए देखते हैं किसने सही आंसर किया था. Okay, Aisha have got the point, so very well done, Aisha. You have answered correctly, and great. But Arush was the fastest for this particular question. Now, next question on your screen, and this is the second last question. No, 5, 4, 3. If you have just joined us, use the code 961353 in the menti.com, and I am starting right now in the 5, 4, 3, 2, 1. So question will be on your screen. Now it is given that A is a matrix of the order m into n. B is a matrix such that AB dash and B dash A are both defined. Then the order of the matrix B. This is very good question. तो इन सारे क्वेश्चन से आपको बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. आई एम वेरी श्योर. और यू विल रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स ऑल्सो, इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो, हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. फील आ रहा है, नहीं आ रहा है कि हाँ सर कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी का एक फील आ रहा है इन क्वेश्चन के थ्रू. और अगर नहीं आ रहा है, लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इंप्रूव फ्रॉम आवर साइड. लास्ट 20 seconds. Apply the basics of the multiplication. When we can multiply two matrix, when the column of the first matrix will be equal to row of the second matrix, only then. And when we will take transpose, row will become column, column will become row. Last 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Okay. So let's see. Only one person have given the right answer. Let me check. Who is that person? Who is this person? Okay, great. Aisha. Okay, great. Aisha from the 9th standard have done this question. तो कोई बोल रहा था कि 9th पर ध्यान दो बेटा. देखो कंपटीशन में आपके साथ. सो अब देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन इज गिवन दैट मैट्रिक्स A is having the order m into n. A B dash. क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार. क्वेश्चन क्या है? Question is just a moment. It's AB dash and B dash A both are defined. दोनों की दोनों defined हैं. तो अभी हमने क्या बोला था? If both are defined, that means we can multiply both of them. Now, if order of the matrix A is m into n, always remember its transpose will have different order, just reverse of it, because row will become column, column will become row, and the order will be this. Apart from this, now A, B dash, let's say B is of the order P into Q. Let's suppose, we have supposed so. Now if B is having the order P into Q, definitely B dash will have Q into P. ठीक है. अब यहां पर A क्या है? M into N. And what is B dash? B dash is Q into P. And what we have said, if two matrices are multiplicative, then the column of the first matrix will be equals to rows of the second matrix. Fine. So n equal to Q. तो आपको एक वैल्यू निकल कर आ गई, Q equals to n. अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है? B dash A is also multiplicative. What is B dash? B dash is Q into P. And what is A? A is m into n. If they are multiplicative, they are defined, then the row column of the first matrix has to be equal to number of rows of the second matrix. So P equal to M. आई बात समझ में? तो यहां से ऑर्डर आ गया B का. B का ऑर्डर क्या बेटा? M into N. क्या ये बात क्लियर है? Q equal to N and P equal to M. बाकी सारे लोग जो सेशन में बैठे हैं, ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं? कैसे हमें ट्रांसपोज डील करना है, हाउ वी शुड मल्टीप्लाई. तो मैं ट्राई करूंगा सेशन को एंड करने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लें सारी चीजों को. ठीक है. अभी ये आपका आखिरी सवाल है इस सेशन का. सो इन द नेक्स्ट 5, दिस इज द कोड. इफ यू हैवंट जॉइन द मेंटी क्विज, यू कैन यूज 961353. ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो. अब अगले 5 सेकेंड में मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं. 5, 4, 3, 2, 1, start. So question will be on a screen that the matrix A is given
ATA is equals to y, then x square plus y square plus z square is. So you have to multiply its transpose. निकालिए आंसर. Last 30 seconds. 5 people have already answered. अच्छा, आपने तुक्का दिया, कोई बात नहीं, सीख लेंगे. ये इसलिए नहीं आता बेटा आपको, ट्रांसपोज शायद आपने नहीं पढ़ा है इन द 9th एंड यू हैवंट रेड द मल्टीप्लिकेशन. ये दोनों चीजें हैं. लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम इज अप. और अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. आई विश ग्रेट, 4 लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया. लीडर बोर्ड बाद में, अभी लीडर बोर्ड से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है और कैसे लगाने वाले हैं. इट इज गिवन दैट a इज इक्वल्स टू, क्या दिया हो आपको, 0 to y and z, 0 to y and z, x y minus z, x y minus z, and x minus y and z, x minus y and z. ठीक है, ये आपका ये हुआ. और क्या दिया हुआ, 80 is equals to a equals to I. Okay, what is A transpose? A transpose means row will become column, 0 to y and z. ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अब 80 में यहां पर लिख दे रहा हूं. What is 80 here? I know a into 80 is I. What is 80? 0 to y and z. Row will become column. X, y minus z, x minus y and z. And multiplication of a, 80. Transpose is I. Let's see. 0 into 0 is 0. 2y into 2y is 4y square. प्लस z इंटू जेड इज जेड स्क्वायर. ये आपका पहला स्टेटमेंट हुआ. अब 0 इंटू एक्स इज 0, 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर. अच्छा, यहां पर एक काम करो बेटा, हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी इसके अंदर, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो मैं क्या चेक करूंगा, आई विल लुक फॉर अ रो एंड ए कॉलम which I will multiply and I will create. क्या create कर दूं मैं, सेम चीज. Now second row with the second column means I will have 9 elements and I am calculating this one. मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं और ये क्या है बेटा, this x into x x square, y into y y square, minus z into minus z is z square. और ये क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. और ये क्वेश्चन 30 सेकेंड्स का था, आंसर हो जाएगा 1. आई सबको बात समझ में? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना था कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है. आयशा, ग्राफ रिलेटेड क्यों? No, this is not a graph related question, not at all. But check करते हैं. Obviously, Bhavesh have topped this particular quiz leaderboard. So very well done. Bhavesh is in the 11th. So 5103P. Congratulations, Bhavesh. And now we really want to see who is the second. Almas is the second. And rest of you, हाँ आप टॉप पर हो पक्के. चलिए, सो दिस इज ऑल. नाउ वी हैव डन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. दिस इज ऑल गाइज, एंड नाउ we will end the session. And till then, take care, goodbye, and keep updated. Like, share and subscribe. And before we end the session, let me update you with some basics. That VCommerce is having a pro subscription plan where you will have approximately 5,000 hours of the live classes.
There you will have 10,000 plus questions. You can choose faculties of your choice, of your language, of your schedule. You can choose your schedule also, okay, and many more features. And all you can have this in the plan of 1 month और इन द प्लान ऑफ 3 मंथ, या तो 3 मंथ का प्लान या 1 मंथ का प्लान. 1 मंथ का प्लान पड़ेगा बेटा 2799 इफ आई कैन रिकॉल, और ये आपका पड़ेगा 2666 पर मंथ. ठीक है. अब आपको ये डिस्काउंट पर मिलेगा 20% ऑफ, और डिस्काउंट का कोड क्या है? ADAPRO, और लिंक कहां पर है? सब्सक्रिप्शन बॉक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू द पर्सन हु नीड्स अस मोस्ट. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर मेंटी क्विज़ेस. बाय बाय.